panelists are so, just a little bit of context. Working People's Charter and Labor Access, they are organizing a series of webinar discussions titled Examining Workers' Housing, Past, Present, and Best Practices in different zones of the country, West, South, East, North, and Central. And WPC is a network of more than 150 organizations working on the issues of informal livelihoods and housing across different cities in India. And labor access as an integral part or pillar of WPC works towards the knowledge creation process. And this series is a part of that, the sessions are part of that. The main aim of this discussion is to look at the policies, strategies, schemes, and programs that were implemented in the past and that are being undertaken in the present by the local, state, and central government for the betterment of workers' housing, particularly in the North Zone. And in the extension of our aim, we would also like to document the practices and ideas that we are sharing today and create a comprehensive database of the cities in order to form a larger campaign strategy for workers' housing across the country. So we would just introduce our panelists now, and our panelists it's a diverse group of people. We have researchers, we have urban planners, architects, academicians, and activists, and of course, they are from different states and expertise, but they all share this common vision, which is their vision of social and political equity in India. So, okay, I'll start with Dr. Gautam Bhan, who is moderating the session today with me. He's the faculty at the IHS Indian Institute for Human Settlements. Gautam teaches, researches, and writes on the politics of urban poverty and inequality, urban and planning theory, housing and identity and social practice. We have Arvind Doni, our panelist who is not here, who is joining us online. He is a thematic lead of urban poverty reduction at Indo-Global Social Service Society. An architect by practice, his core area of work is on urbanization and its intersection with poverty entities. We have Shalini Sinha, who's India country representative for WIGO. WIGO is Women in Informal Employment, Globalizing and Organizing. Her work focuses on developing and documenting decent work and livelihood opportunities for women workers in the informal economy. We have Nidhi. Nidhi is also part of IHS and has been trained as an architect. Her primary research interests are tenure, security, rented housing, and building practices in the informal sector. We have Bipin Roy. Uh, Bipin Roy is not here today. I think online maybe I need to check. He's working with DUSIB. DUSIB is Delhi Urban Shelter Improvement Board. He has a vast grassroots experience working with urban poor and mainly homeless in Delhi. We have Mukta here with us. Mukta is a fellow at Center for Policy Research and architect and urban planner by practice. Her research interests include housing and urban poverty, urban informality, integral migration, as well as urban transformation in small cities. We have Elizabeth online. She's a member of Nari Shakti Manch, which works on the concern and challenges of domestic workers and labor market, particularly in areas like Gurgaon and Faridabad of Haryana. We have Tikendra with us. He'll join later. So Tikendra is former deputy mayor of Shimla, Himachal Pradesh. He researches and writes on urban development, urbanization, poverty, and housing. We have Sandeep Khare, social activist based in Uttar Pradesh. He is secretary at Vigyan Foundation, which deals with urban poor and occupational groups like construction workers and domestic workers. We have Mansoor Bhai here. Mansoor Bhai he works with Joint Hawker Action Committee and also works with Jan Pehal. Jan Pehal works with homeless in Delhi and Joint Hawkers Action Committee works with street vendors in different cities. And I'm Shalaka. I'm a social designer by practice, and I'm currently working at UVA, Youth for Unity and Voluntary Action. Apart from that, I'm the coordinator of Nevi Delhi campaign, a campaign that calls for participation and inclusion in the city master plan process. So we'll just start. Yeah. So thanks, Raka. So the way we'll organize the discussion today is that we will open with a round of questions to our panelists and take a first response for 4 to 5 minutes. And our idea is to then build on that and relating and talking to each other rather than thinking of long panel discussions. And जैसे हम चलते जाएंगे हम हिंदी और अंग्रेजी के बीच में भी
बांटते जाएंगे, आप अपने सवाल या चैट में दोनों भाषाओं में डाल सकते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल द पैनलिस्ट ऑल्सो अपनी भाषा को बीच बीच में बदलते जाएं। ऑटोमेटिकली जो हमारा पैनल है उसमें हो ही जाएगा, इट्स नॉट अ कंसर्न। तो हमारा जो सवाल है वो है कि ये जो तीन हमारे शब्द हैं, थ्री कोर आइडियाज हैं, वर्क, वर्कर एंड हाउसिंग, काम, श्रमिक और आवास। And the idea is to think about the ways in which these three come together. Are we talking about policies that specifically provide worker housing or affordable housing का नाता क्या होता है? Are we talking about अक्सर housing में हम किफायती आवास की बात करते हैं, affordable housing. That is more housing that is needed at a certain price point. Right? It's about the income of the household. उसमें worker identity central नहीं होता. मगर we also have a long history of claims to housing. मेरे को आवास का हक इसलिए है क्योंकि मैं एक कामगार हूँ और मेरे काम के आधार पे मुझे आवास है. There are 2 points here. Claims to housing from workers. तो वो claim किसको करती है? Is it to the employer? Is it to the city? If I claim housing as a worker, how is it different to claim housing as a citizen? नागरिक के तौर पे आवास मांगना और कामगार होने के आधार पे आवास मांगना, इनमें जुड़ाव क्या है और फर्क क्या है? और आई थिंक आखिरी चीज जो हमारी ये बात है कि ये जो हमारे आज का संवाद है वो सिर्फ इसको एक तरीके से तर्कों में जोड़ने की बात नहीं है. It's not just a conceptual exercise. We actually want to think about the experiences and practices, historical, contemporary, that tell us कि देखो, if you think about worker housing, we must think about it in certain ways. We must think about certain issues. कुछ मुद्दे सामने ज़्यादा आते हैं. But there are also models of delivery. There are historical examples of building worker housing, accessing worker housing, thinking about worker housing. So we want to share stories of these practices more than anything else. That is the point of the discussion today. हमने किया क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए, basically out in that. Right? So the idea is not to find some single solution. ना ये silver bullet best practice वाला transferring policy है. But we are all folks who have long engagements and we have struggled with the question of worker housing. It's not we have cracked it or succeeded, we've struggled with it. But उस struggle के पहलू क्या, उसमें detail क्या? So let me, for example, start with Mukta. Right? If you were to connect worker housing, right? I know so much of your work has been on the question of rent and thinking about rent as the thing that really comes in when you start thinking about worker housing. So from your experience, Mukta, what would you say is the way to think about these questions? So I'll start with saying that the relationship of the worker with the employer or the employing organization, वहाँ से शुरू करते हैं कि किस तरीके का रिलेशनशिप है. और मेरा काम ज़्यादातर गुड़गांव में रहा है, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर है, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर है. It is not a unique situation. There are many industrial clusters, cities where the migrant worker, especially the interstate migrant worker, is a major part of the workforce. तो ये जो वर्कर कैटेगरी है ये क्लेम्स नहीं कर सकती है, उनकी वहाँ पे कोई क्लेम्स करने की क्षमता बहुत कम होती है. और आईएनटी मानेसर का अगर हम एग्जांपल लें, जहाँ पे इतनी बड़ी लेबर मूवमेंट्स और यूनियन मूवमेंट्स हुई हैं, जिनमें छुपा हुआ तर्क हाउसिंग का जरूर था, लेकिन वो कभी उभर के बहुत बड़ा तर्क इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो यूनियन के लीडर्स थे और जो यूनियन के मेन वॉइसेस थे वो हमेशा लोकल वर्कर्स थे. तो दे वर हरियाणवी वर्कर्स हु हैड फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, और जो इनफॉर्मल वर्कर्स थे, कॉन्ट्रैक्चुअलाइज्ड मतलब कैजुअलाइज्ड कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स थे, उन ऐसा नहीं है कि उनके मुद्दे बिल्कुल आगे नहीं आए, लेकिन वो हमेशा दबके ही रहे. और तो वो हिस्ट्री और उस कॉन्टेक्स्ट में हम किस तरीके से वर्कर हाउसिंग के बारे में सोच सकते हैं. और आई थिंक इस वक्त पोस्ट कोविड जब हम इकोनॉमिक रिकवरी की बात कर रहे हैं और जब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन इतने टूटे हुए हैं कि टेक्सटाइल, ऑटो, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत मंदी चल रही है. तो ये वर्कर्स जो हैं, जो सालों से इन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर्स कैजुअलाइज तरीके से, उनका पहले काम पे ही जो उनकी जो पकड़ थी वो पकड़ ही कम हो गई है. So we are seeing a lot of distress around the question of work, and they are moving back and forth between the villages and the city, trying to figure out कि कब कहाँ कितना हमें स्टेबल काम मिल सकता है. तो इस सिचुएशन में
हम हाउसिंग के बारे में कैसे सोच सकते हैं और क्यों सोचना जरूरी है। क्योंकि इतना सिंपल नहीं है कि अच्छा काम नहीं है तो गांव वापस चले जाए, क्योंकि हम पिछले 25 साल से गांव में नहीं रह रहे हैं, तो गांव वापस जाना इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर दिस कैटेगरी ऑफ वर्कर्स, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन स्मॉल स्केल लैंडलॉर्ड्स जो अर्बन विलेजेस, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, ऐसी जगहों पे टेनमेंट बना के उनको रेंट पे घर दे रहे हैं। तो वो दो लोगों से नेगोशिएट कर रहे हैं, एक तो जो वर्क कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ एक नेगोशिएशन जारी है, और दूसरा जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लैंडलॉर्ड है उनके साथ नेगोशिएशन जारी है। अब जहाँ पे हमें बहुत अच्छी पकड़ नहीं है वो यही चीज है कि इन दोनों फिगर्स के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। जहां तक मेरा रिसर्च कहता है बहुत मजबूत रिलेशनशिप नहीं है। मतलब एक बहुत क्लीन आप एक चेन नहीं बना सकते हो कि फैक्ट्री और फैक्ट्री मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्टिंग जो पूरा एक सेटअप है उसका जो हाउसिंग हाउसिंग ब्रोकरेज और लैंडलॉर्ड वाला सेटअप के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं, ये हम नहीं बना पा रहे हैं। तो आंसर गौतम्स क्वेश्चन, वी आर नॉट clear on whether the claims to work and the claims to housing can be linked for casualized workers. And वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि इस कैटेगरी के लोगों को शहर में आके दो अलग नेगोशिएशन साथ में करने पड़ते हैं और वहां पे वो बहुत बुरी हालत में फंस जाते हैं। कोविड में हमने ये देखा कि बहुत कुछ कुछ इंडस्ट्रीज और कुछ सेक्टर्स थे जो बहुत जल्दी रिकवर हो गए थे, लेकिन workers may not have had the housing because landlords were not willing to keep them, or yeah. So so this is the, I mean, we are not able to link these two things for this particular category of casualized migrant workers. They are dependent on landlords for housing, and that's a whole different set of negotiations. And the work scenario is right now extremely unstable. Of course, this is going to depend from city to city and industry to industry. There are some industries that have recovered in a more stable way, but overall, with the SMEs in trouble, with any kind of manufacturing that is part of a global supply chain in trouble, the question of housing has to be linked back to the question of whether work itself is stable or not. And if that is not stable, then what are the alternative kind of occupations that these workers are looking for in cities? Because it is quite clear that they are not going to just go back to their villages. So they are reconfiguring their strategies of work. And if they are moving from manufacturing work to service sector work, then that's a very different question. Because then your employer is not uh, even as identifiable. Like suppose it's a domestic worker or it's a construction worker, your employer is neither stable nor as identifiable as if you were doing manufacturing work. So it's very difficult to link these two. And in my work, the question that I've raised is that if cities are dependent on migrant labor for whatever it is that is holding the economy up, whether it is manufacturing or whether it is IT or whether it is other kinds of services, what are they going to do to intervene with this informal housing sector so that it has some semblance of it basically it acts as a support and a foothold for these workers rather than as another point of exploitation. That's the question that we need to constantly ask. The reason why it is opportune to ask it is because this housing is actually, if we see these neighborhoods, informal settlements, and retrofitting them into workers' neighborhoods as an urban project, then that's not only of benefit to the worker but also to the landlord there. तो लैंडलॉर्ड की जरूरतें हैं कि वो उनको फाइनेंस मिले, अपना जो रेंटल हाउसिंग बना रहे हैं उनको ज्यादा अच्छे से बनाने के लिए, उनको सर्विसेज मिले, सीवर कनेक्शंस मिले, वाटर कनेक्शंस मिले, उनकी भी यही मांगे हैं क्योंकि उनकी भी आमदनी, उनकी भी लाइवलीहुड इन रेंटल्स पे डिपेंडेंट है। बट समहाउ लोकल लेवल पे या स्टेट लेवल पे ये सोच जोड़ना इतना अच्छे से जुड़ नहीं पाई है। These two different things of trains of thought. How do you retrofit these neighborhoods into worker housing neighborhoods, into affordable housing neighborhoods? That's not been a very clear train of thought, and that I leave it at that. So there are two basically disjuncts between work and housing, and disjunct between seeing neighborhoods as informal, unplanned, and therefore undesirable, or seeing them as opportunities to be retrofitted into worker. Thanks, Mumbai.
these are two very important things, and I want to hold on to two of these questions. One is that the question of worker housing is often about when the landlord and the employer come together and when they come apart, right? So अगर हम पुराने तरह से सोचते हैं कि if you think of the chores, if you think of the HRA allowance, if you think of government provided housing, if you think of factory worker housing inside industrial estates, in all of these cases, a model of worker housing is when the landlord and the employer come together, directly or indirectly. Employer is responsible for housing, wo khud de, HRA de, etc. There is a connection that the employer has a stake in housing. And casualization, informalization, contractualization has meant कि ये link sever हो गया. That housing की जिम्मेदारी employer से नहीं आती, और that employer-employee contract is not the basis of claims for housing. तो अगर वो employer को claim नहीं है, तो फिर वो state को claim होगा, या वो private market को claim होगा. And I also know, and at some point I'll come back to you and say कि अभी what is meeting that migrant worker rental market is also something you studied in Gurgaon, right? How urban villages have transformed to absorb working migrants. Particular kinds of housing conditions have transformed. But I wanted to come to Elizabeth if she's on Zoom. Elizabeth, can you hear us? Elizabeth? You may need to unmute, Elizabeth. Okay, I'll wait for Elizabeth to unmute until she can. Shall I just check with her if she's online so we can just check? So until then, let me then pick up the second part of what Mukta was saying, which is this question key upgrading or retrofitting is a practice that we have typically right now seen as improving shelter. Housing को improve करने के लिए हम upgrading की बात करते हैं. But here is upgrading for worker housing looking at rental within informal settlement, right? That connection. But एक और connection है housing and work community which you're talking about, which is that for many particular kinds of workers, and Mukta is reminding us कि workers भी एक type के नहीं होते, workers versus migrant workers, but दूसरा हमारा जो set है कि workers of different sectors have different particular relations with the housing. So Nidhi, you've been looking at home-based workers, where the question of housing and work is completely inseparable because काम ही घर पे हो रहा है, and we know that home-based work is one of the largest categories, particularly of women's informal work in South Asia. So आपके काम में, as you're looking at worker housing through the lens of home-based work, what is it? How is it that you want us to think about these questions? I want to connect a little bit to what Mukta said earlier. This interesting way of talking about work and worker and employers. And so even when we talk about work which is carried out at home, there are different kinds of, you have even different kinds of how that happens. That relationship between worker and employer is different. At places it is industrial outwork, which we're all familiar with. Then there are also people who are employed by themselves. So there's no employer who can sort of, what Mukta was talking about, who you can go to a claim housing improvement for or to. So what happens in that case? And then I think something to talk about then is this very spatial nature of work and home work, which is productive activities, and home, which is domestic activities, taking place in the same vicinity. So when that happens, they also interfere with each other. They can hate each other, but in most cases, as anecdotally we will know, they tend to interfere with each other. And what we see in our research, what we see in our research is people tend to improve it as a way to make better spaces for work. So, for example, someone taking tuitions in their house would want to improve the flooring so that people can fit in and he can have a better sort of um, way of teaching. Or someone who's doing tailoring would want to have a better finish of the facade so that people think of it as more professional. So the thing to talk about over here is work happening at home is also a trigger for home improvement. And what Mukta talked about upgradation, how that can help landlords, it can also help not just better housing but also better conditions of work. I want to Ask you then, but does upgradation look different? Not just to improve shelter, improve service, improve sanitation. Yeah,
condition, हम कह रहे हैं common sense upgradation, वो एक plan है to improve spaces for your case and spaces where workers live, particularly on rent, in Mukta's example. But does the upgradation change? क्या spatially practice में कुछ फर्क होता है if you're upgrading, keeping in mind home-based work, for example? Do norms change? Does the way we think about infrastructure change? तो हमारी spatial practices में क्या फर्क होता है if I'm upgrading a settlement जहाँ बहुत सारा home-based work होता है, or I'm upgrading a settlement where there's no home-based work, where it's largely residential or largely migrant rental housing where the work happens elsewhere? Is there a difference in what upgrading looks like? So I actually have two different examples talking about different things over there. So for instance, when you talk about improving housing, spatially does it look different? Are the norms different? So interestingly, when we did the study, we also talked about, we also looked at, do residential norms seem to be enough for carrying out work at home? And for the most, they are, because when you talk about good residential spaces, you're talking about good access to infrastructure, you're talking about good ventilation, good light, appropriate distance between different buildings to allow for that kind of light and ventilation to take place, which is actually more than what you would look in commercial buildings. So commercial buildings tend to have a smaller setback in that sense. So residential buildings can sort of, if you design well, if you design good housing for living, you also tend to create housing which can be used as place for work. To also, I mean, another example which is a little contrary to this is, do settlement at settlement level, what does upgradation for home-based work look different than upgradation for just home? There's an interesting anecdotal example of Chirag Delhi, where Momo workers, people make momos at home. So they're also tenants. They're not people who own these homes. So typically migrants work in the sector and they keep changing every 1 year or 2 years. They keep changing their rented space. Interestingly, what it has triggered over there is a practice of landlords catering to the demands of these tenants. So, for instance, momo making requires washing the space completely after having done with the safe space will serve as your production space during the day. At night, you sleep over there. And when that happens, there are 3 or 4 typical things that migrants look for when they're looking for housing. One is access to water. Second is good tile flooring. This is very specific because tile flooring means that you're able to wash it more frequently. And third is access to a certain standing kitchen or something to that effect. So there's a specific typology of housing that you see being produced as a result of a certain demand of housing, which is catering to work as well as home. So, but to come back to my initial point, if you design well, if every home had access to water, had access to proper infrastructure, then most houses would end up being able to adapt to these needs. That's a very useful way to think about it, right? Dignified housing with residential norms for good living are in some ways good enough for many forms of home-based work, not for household industry, but certainly for home-based work. And I think ये काफी तादाद पे यही है कि हमारा सवाल we may not need to pull apart the question of home and life so starkly in many kinds of contexts. Elizabeth, are you able to join at this point? Kuch aspect I just saw a message I wanted to check. Elizabeth तो नहीं जुड़ पाई है, नहीं जुड़ पाई। but Gautam, we have Anita Kapoor here, जो कि फरीदाबाद और दिल्ली में भी कई इलाकों में काम करती है। तो अगर अनिता जी आप भी हमको थोड़ा बता पाओ डोमेस्टिक वर्कर्स का जो ये कनेक्शन है वर्क और उनके घर का, तो आप एक बार अपने आप को अनम्यूट करके कुछ बोलोगे? अनिता जी आपको यहाँ पे चिन्मय अगर आप पोस्ट हो तो आप उनको अनम्यूट करोगे, एलिजाबेथ को भी और अनीता जी को भी। चिन्मय मरीना? Yeah, I think Elizabeth is here. We can see her. But
can you hear us? Elizabeth, can you hear us? आप हमको सुन पा रहे हो? Can she unmute? Otherwise, I'll just move to Arvind then. I see her. Hi, Elizabeth. Good, she can hear us. Let's wait for her. I see her plugging in. ये हमारी जिंदगी है आजकल. Unmute, plug in, unplug in, Bluetooth headphones, phones. एक सेकंड रुक जाते हैं एलिजाबेथ. एलिजाबेथ और अनीता जी आप भी थोड़ा जोड़िएगा एलिजाबेथ की बात. बिल्कुल हम बिल्कुल एलिजाबेथ के बाद अनीता जी के पास जाते हैं. हाय एलिजाबेथ, छोटी में दिखती है. Can you hear us, Elizabeth? We can't hear you yet. No, we can't hear you, Elizabeth. Just see, maybe try it out. Oh, I sense young generation has come to tech rescue. Not yet. If you try without the earphones, just try using the mic of the laptop only. No, I can't hear still. Elizabeth, can you unplug your thing from unplug it? I think she tried that also. No, we still can't hear her. I think it may be. Can't hear you, Elizabeth. And Anita ji, आपको हमारी आवाज आ रही है? नहीं, this is also not working. I'm wondering maybe, Elizabeth, maybe you need to log out of Zoom and come back in again and leave the earphones unplugged. Then it will check the computer audio. Let's try that. Huh? Anita ji, आप unmute कर पा रहे हो? उनका चैट पे अभी मैंने मैसेज देखा, यहाँ थोड़ा दूर है तो पढ़ नहीं पा रहे. तो जब तक अनीता जी से बात होती है, I just requested Chinmay and Marina, if you can just see if that happens. Arvind, you are able to hear me? Yeah, Gautam, can you hear me? Hi. Let me bring you in, Arvind. So Arvind, you're hearing two kinds of things so far, right? एक कि there is this speciality of multiple types of workers, right? Home-based work में एक तरीके से worker housing जुड़ रहा है. There is migrant workers doing something else. And you know the claims are being different. I want to pick up with you particularly this question of claims that Mukta brought up, right? कि कौन किससे claim कर पाता है, right? And home-based work में भी, and technically in one way we're saying कि employer कौन है, जो हम informal sector में the question we always ask in the context of non-registered enterprise, non-availability of contracts, also unregistered rental agreements, no written rental agreements. Who is the landlord and who is the employer? Claim किसके type होती है? But the other thing that in your work you've also done a lot is emphasize the question of housing as a right. Right? So it goes back to the question also कि a claim or your right, currently in your experience, where have the ability to claim a right to housing as a worker? वो कहाँ एक तरीके से उस claim की भाषा क्या है? Who are we claiming to? What are we asking for? उसकी delivery कैसे हो सकती है? So from, on this question particularly or on any other way you want to connect worker housing, let me come to you. Thank you, Gautam, for the question. And शायद मैंने काफी starting में discussion miss किया है. तो एक I think रजत का message है कि लोग unmute नहीं कर पा रहे हैं. I think वो एक बार please host check कर लें. और दूसरा मेरा ये था कि जो link circulate हुआ, आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है. हाँ, जो लिंक सर्कुलेट हुआ था वो हमारे दोस्त फिर से एक बार जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स रह गए उनको सर्कुलेट करें, क्योंकि मैं किसी दूसरे मीटिंग में पहुंच गया था. तो ये थोड़ी दिक्कत हो रही है. तो आई थिंक प्लीज ये कर दीजिए साइड में. आई थिंक दैट विल हेल्प अदर फोक्स टू जॉइन इन हु आर स्टिल प्रॉब्ली ट्राइंग टू जॉइन. तो जो आपका सवाल है गौतम, इसमें मुझे लगता है कि वर्कर राइट्स स्लैश ये जो हमारा हाउसिंग का पूरा आर्गुमेंट है, एटलीस्ट अर्बन में बहुत जगहों पे देखिए क्या हो रहा था कि बहुत सारे दूसरे कारणों के वजह से शायद कि वर्कर राइट्स हम कहीं ना कहीं हाउसिंग राइट्स तक लेके नहीं आ पा रहे थे. हमारे डिस्कोर्स में जरूर था कि हम शहर के निर्माता हैं, सिटी मेकर्स हैं और
शहर के Arvind, just 1 second, just beach में ना please switch to English. We have many non-Hindi speakers on the call. That's also on the chat. Okay, great. Thank you. तो ये जो हमेशा एक डिस्कोर्स रहा है ऑफ वर्कर राइट्स and how we are the city makers and make the city and contribute to the city building, but it never kind of really translated into at least in sort of my sort of engagement with this issue, it never kind of translated into housing rights as a discourse, and it's only happening right now. And possibly one of the reasons where this thing like really stood out was COVID, and that is where first for migrant workers and then a lot of other informal sector workers, this kind of there was this realization that, you know, of why we are not then asking for where they are staying and what are the conditions that they are living and so on and so forth. So that connection between worker and housing in the city for a long time was not there, at least in the case of informal workers. You had other provisions historically, and there were other cities that we always kind of looked up to in the form of what, let's say, happened in Mumbai, and how mill workers ने अपने जो demands थे अपने शहर के बनाने में, निर्माण में, वो कैसे उस पे उन्होंने क्या बोलते हैं अपना क्लेम किया. पर एक चैलेंज हमेशा से ये रहा है कि क्योंकि इनफॉर्मल वर्कर्स का जो कहते हैं ना कि अगर एक स्पेक्ट्रम होगा डेवलपमेंट का, so they were just at the stage that we are in terms of our struggle for informal workers and their rights, livelihoods, and right to the city. They have just started to get recognized in different categories and forms as informal workers. So for the longest time, we always felt that how do we make that huge jump and transition in demanding for housing and housing rights. The other probably way of looking at it is also the fact that the government or the state never went beyond marking something as big as, let's say, informal settlements in our cities, which house from 10 to 30 to 40% of the population. They have never gone beyond investigating or categorizing these settlements further and differentiating them on basis of what kind of worker groups are living and working there. So maybe that categorization also probably was problematic and something that we could not, get through or see through, because the state was kind of setting different categories for us also. So our struggle kind of got limited कि अच्छा चलो पहले आइडेंटिटी कार्ड मिले, चलो पहले वेजेस मिल जाएं, चलो पहले ये मिल जाए वो मिल जाए कि हमें अपने जगह से एविक्ट ना करे. अरे घर की लड़ाई तो शायद हमको लग रहा था कि बहुत दूर है और बहुत दूर की बात है, पर माइग्रेंट वर्कर्स के केस में शायद ऐसा नहीं था. There was always some sort of policy provision in Interstate Migrant Act जो कह रहा था कि you need to provide housing, so on and so forth. So those things have just kind of gradually moved in. I think the challenge would be and could be for us is to how do we link housing rights discourse and argument to the existing schemes and policy measures for workers at this moment. I have not really studied the labor codes really that well, but I'm sure other people will do it. But now let's say BOCW has provisions, has finances for such a intervention. Street Vendors Act, for instance, the act talks about regulation of livelihood and protection, but it also leaves this huge sort of provision that can extend up to providing housing rights and housing security for street vendors who are recognized as street vendors. So first, probably even in the struggle, हमारे इस लड़ाई में शायद पहला तो ये होगा कि यार ये existing schemes में exactly हमको आंकड़ा तो पता चले. आंकड़ा है, ऐसा नहीं कि आंकड़ा नहीं है, but at least कि कौन-कौन से different categories and types of workers हैं जो इस तरीके से recognize हो गए हैं. इनके लिए जैसे I think निधि का बड़ा अच्छा point था कि इसमें फिर हमारे और arguments और थोड़े nuanced arguments आ सकते हैं कि अच्छा बस्ती में है तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, उधर किस किस्म के upgradations हो सकते हैं. I think that can come in, I would say. Probably this is the right time for that. Thanks, Arvind. धर्मेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो. हाँ, मैं अनीता कपूर बोल रही हूँ. कैसी हैं? हाँ, नमस्ते, ठीक हूँ. अच्छा अनीता जी, अगर आपको मेरी आवाज हम आपको सुन पा रहे हैं अब, तो मैं आपको जी कि
हम ये भी पूछ रहे हैं कि जब अलग अलग प्रकार आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मेरे की पास। बात कम आ आज रही पता नहीं ये लिंक में भी ना बहुत प्रॉब्लम हुई है, जुड़ ही नहीं पा रहे थे हम लोग, फिर दूसरा किसी साथी ने लिंक भेजा है तभी जुड़ पाए हैं। आईटी वाले आसमान के सितारे आज अपना ही खेल खेल रहे हैं। अब सुन पा रहे हो आप मुझे? जी, बहुत अनिता, आवाज कम आ रही है पर फिर भी मैं सुन रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ जी। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ये कहने के लिए कि क्योंकि हम खास तौर से देख रहे हैं कि अलग अलग कामगारों के लिए आवास का मुद्दा बदल कैसे जाता है। तो घरेलू कामगारों के लिए जो जी बाकी घरों में काम करते हैं, अक्सर 4 दिन में 3-4 घरों में चल के जाते हैं, जी और काम रहने की जगह और काम करने की जगह काफी खास होता है। जी आपके आपके अनुभव में कामगार और आवास का जो मुद्दा है, जी वर्कर एंड हाउसिंग, मैं अंग्रेजी में भी एक बार कह दूं बाकियों के लिए, that is there something specific about domestic work which has a very particular geography of work? We know that most domestic workers work in 3 to 4 houses which they walk to. The timing of work is different. सुबह 6 बजे होना होता है, जिसके पहले जी होता है, फिर 2 बजे। तो एक तरीके से जो नाता है रहने की जगह और काम करने की जगह, वो घरेलू कामगारों के लिए काफी खास होता है। तो आपके नजरिए में घरेलू कामगारों के लिए आवास के मुद्दे को हम कैसे उठाएं? क्या ये मुक्ता के मुद्दे से जुड़ा है कि ज्यादातर वो किराएदार हैं? क्या इनको जी हम प्रवासी और माइग्रेशन के तौर पे देखें? मगर वी ऑल्सो नो दैट डोमेस्टिक वर्कर्स बहुत लंबे तौर से एक एक घर में काम करते हैं, उनका माइग्रेशन पैटर्न अलग होता है। जी हमारे खुद का काम दिल्ली एलिजाबेथ गुड़गांव से अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक वर्कर्स 15-20 साल तक एक शहर में रहते हैं। तो माइग्रेशन और डोमेस्टिक वर्क का अदर फॉर्म्स का होता है। तो इन सब घरेलू कामगार के तौर से आपके क्या सोच होंगे आवास के मुद्दे पे? और अरविंद ने अभी बोला कि हमने आवास और कामगार के हक, वर्कर्स राइट्स और हाउसिंग राइट्स, पीपल टू जॉइन देम। इज दिस योर एक्सपीरियंस आल्सो? आपके अनुभव में भी क्या ये सच है? ये हमारे आंदोलनों ने दो प्रकार की मांगों को साथ हम जोड़ नहीं पाए। जी थैंक यू गौतम जी। अभी मैं ये कहना चाहूंगी कि असंगठित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पूरा असंगठित क्षेत्र को घरों से बिल्कुल वंचित किया गया है। मतलब वो काम करने का अधिकार है दिल्ली में पूरा, अगर विकास की बात करें तो वो अधिकार बिल्कुल उनको है कि दिल्ली का विकास वो करेंगे। अब मेरा काम दिल्ली की बस्तियों में और फरीदाबाद और तमाम जगह पे है असंगठित क्षेत्र में, पर वहां पर ये बहुत दुखद है और बहुत तकलीफ से मैं ये कह रही हूँ, हम सब जान भी रहे होंगे कि घर बनाने वालों का भी घर नहीं है। जो घरों में काम करने जा रही हैं महिलाएं, 4 से 5 घरों में अगर वो काम करने जाती हैं, उनका भी घर नहीं है। हमने और बहुत बिल्कुल सही कुछ और साथी भी कह रहे थे कि हम ये मुद्दे उठा रहे हैं कि उनके लिए शिक्षा की बात करें, उनके लिए बेहतरी की बात करें, रोजगार की बात करें, पर कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से मैं भी ये महसूस कर रही हूँ कि आवास का जो मुद्दा है, जो बहुत गंभीर तरीके से और बहुत उनकी इतनी अहम जरूरत है, उसको उठाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं गौन हुआ है। जैसा कि अगर मैं घरेलू कामगार की बात करूं तो वो 4 या अनिता दी, अनिता दी की आवाज छूट गई। क्या वो जूम में भी लॉग इन है, लॉग आउट तो नहीं हो गई? अनिता दी आवाज आ रही है आपकी, हमारी, किसी की भी? अच्छा, मेरे ख्याल से ओके, तो कोशिश करते हैं जब तक अनीता दी वापस आती हैं। थोड़ी जुगलबंदी चल रही है हमारी आज के पैनल में, बट यही करनी पड़ेगी। अब शालिनी, She's not here. She's not here. शालिनी ओके, सो Elizabeth, any luck on the thing? Is that Anita ji is logged out? Okay. Dharmendra ji is here. धर्मेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी गौतम भाई। बिल्कुल, थैंक। हाँ, तो धर्मेंद्र जी
कि मेरे को ये जो हम बचपन में म्यूजिकल चेयर्स खेलते थे ना कि कोई भी कुर्सी में कोई बैठा मिल जाए, आज के वक्त आप हैं, तो ये truly सच में राउंड टेबल है पैनलिस्ट के बिना. So I just wanted to say, Dhavendra ji, Arvind raised a point about claims की existing acts में हमने BOCW में टेक्निकली हाउसिंग हो सकता है, मगर इतने एग्जांपल्स हमारे पास नहीं है स्टेट में कि BOCW हाउसिंग यूज करेंगे. We don't have examples of BOCW funds, for example, being used. But street vendors का जो act which came out more recently, आपकी सोच में, और आप स्ट्रीट वेंडर्स के मुद्दे पे बहुत सारे काम करते हैं, जन पहल में, जॉइंट एक्शन कमेटी में, क्या वेंडर्स के आवास के मुद्दे के बारे में डिस्कशन हुई थी जब स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट की मोबिलाइजेशन हुई थी? एक्ट में ये आंकड़ा है that 2.5% of workers in a city should be assumed to be street vendors. Right? It gives us this population figure. And we have made claims to working space. तो मतलब vending space की होनी चाहिए. अगर इस 2.5% आंकड़े के बेसिस में आवास का क्लेम हो सकता है, can we use this 2.5% to make claims to housing? क्या स्ट्रीट वेंडर्स मूवमेंट के बीच में वेंडर्स और वेंडर हाउसिंग के बीच में ये डिस्कशन हुई है, या जैसे अरविंद कह रहे हैं ये दो मुद्दे अलग-अलग अभी चल रहे हैं? These two movements are not, issues are not coming together in the movement. What has been your experience in this? जी गौतम भाई, थैंक यू. इसमें दो बातें हैं. एक तो है कि स्ट्रीट वेंडर्स की जो एक्ट है और उसके संबंधित जो रूल्स है स्टेट की, और उसके फर्दर टाउन वेंडिंग कमिटीज ने स्कीम्स फ्रेम की हैं. तो हाउसिंग एज सच वर्ड यूज नहीं किया गया है, नीदर इन द एक्ट नॉर इन एनी रूल और स्कीम, बट देयर इज ए प्रोविजन इन वेरियस स्कीम which says that all other schemes for the welfare of street vendors should be devised by the town vending committee. तो ये काफी ब्रॉड फ्रेमवर्क है जिसके तहत निश्चित रूप से हाउसिंग लिया जा सकता है, एंड टाउन वेंडिंग कमिटीज आर empowered by the act to undertake this as a subject. So no doubt about that. But right now there is no specific mention of housing for street vendors. But the act does provide an opportunity and a space to discuss that, at least within the town vending committees, and make recommendations and do necessary actions in that direction. स्ट्रीट वेंडर्स के बीच में हाउसिंग एक बड़ा कंसर्न रहा है और बिल्कुल बातचीत का अहम मुद्दा रहा है. उसकी दो वजह हैं. एक तो ये कि मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स आर माइग्रेंट. सिंस दे आर माइग्रेंट, दे हैव टू rent some space in a city. In some cases, they are not even able to rent a space, so they are homeless. In some other cases, they somehow build their own housing, which is often jhuggi jhopri cluster, and make their livelihood through street vending. अब यहाँ पे एक मेजर कंसर्न ये है कि हाउस उनके बिल्कुल काम का एक लिविंग पार्ट होता है. मतलब दे कैन नॉट वर्क विदाउट ए प्रॉपर हाउस, क्योंकि स्ट्रीट वेंडिंग का जो बैकएंड काम होता है वो घर के अंदर ही होता है, और उसमें पूरी फैमिली एज ए लेबर उसमें एम्प्लॉय होती है. एक तरह से अनपेड लेबर ही, लेकिन एक तरह से फैमिली बिजनेस बन जाता है. तो बच्चे भी सुबह से लगते हैं, अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं तो महिला साथी अगर घर पे हैं तो उनका भी पूरा सहयोग रहता है. तो आप अगर नॉर्मल रूटीन देखेंगे स्ट्रीट वेंडर्स की, तो उनका प्रोक्योरमेंट अर्ली इन द मॉर्निंग होता है मंडियों से, और फिर वो सारा सामान जो है वो लाकर उसको स्टोर करना होता है घर के अंदर ही. अब स्टोरेज फैसिलिटीज पे जब तक आपके पास वो मिनिमम बेसिक्स नहीं है, वो मिनिमम बेसिक्स की जब बात मैं कर रहा हूँ तो मेरा इशारा उस ओर है जहां आप फूड को सेफ तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. अब आप सबको मालूम है कि फूड का सबसे बड़ा दुश्मन वो है मॉइस्चर. जैसे अभी किसी साथी ने बात की थी मोमोज बनाने वालों की, कि वो मोमोज घर पे बनाते हैं. तो उसी प्रकार से एक पॉपुलर डिश है स्ट्रीट वेंडर्स में गोलगप्पे, मान लीजिए. तो गोलगप्पे को भी घर पे ही बनाते हैं लोग आमतौर पे, और फिर वो दुकानों पे ले जाके, अपने पुस्काट पे ले जाके उसको सेल करते हैं. अब इस तरह के जो आइटम्स है, या बॉइल्ड पोटैटो है ना, उबले हुए आलू, तो मोस्ट ऑफ द कुक्ड फूड है ना, इवन इफ इट इज फ्राइड लाइक गोलगप्पे, they need to be protected from moisture.
उनको मॉइस्चर से बचाना होता है, और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, जो आपका घर है, आवास है, दैट शुड बी वेल एक्सपोज टू सन, है ना, वहां धूप अच्छी आ रही हो, हवा अच्छी आ रही हो, कोई उस तरह का कोई डार्क कॉर्नर नहीं हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि स्ट्रीट वेंडर्स आर compelled to keep such things in dark corners, which are almost in many cases moisture friendly. तो इसका परिणाम ये होता है कि उनको भारी पैमाने पे, चूंकि उनकी हाउसिंग प्रॉपर नहीं है ना, नुकसान होता है, उनके लाइवलीहुड का नुकसान होता है, उनके प्रोड्यूस खराब हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उनके इनकम पे सीधा असर होता है। तो हाउसिंग से मतलब एक समझ तो है उनके अंदर कि और एक बातचीत में हमेशा रहा है कि प्रॉपर हाउसिंग इज गोइंग टू हेल्प देम अर्न मोर, है ना, उनके लाइवलीहुड को और बेहतर करेगा। लेकिन एक्ट जानकारी जो है, एक सवाल मैं पूछूं, ये तो हम, ये जो जुड़ाव है, आई थिंक ऑल एक्सेप्ट, राइट, अलग अलग तरीके से ये जुड़ाव जुड़ता है। इट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउसिंग, नॉट फॉर इट्स ओन एंड, नॉट फॉर डिग्निफाइड शेल्टर जो अपना मकसद है फॉर इट्स ओन एंड, बट टू इंप्रूव द एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, राइट। जस्ट थिंक ऑफ हाउसिंग एज दैट। ये डोमेस्टिक वर्क के लिए एक तरीके से हो रहा है, ये होम बेस्ड वर्कर्स के लिए हो रहा है। अब आप कह रहे हो स्ट्रीट वेंडर्स, वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, दैट स्ट्रीट वेंडर्स बैक एंड अनपेड फैमिली केयर वर्क इज होस्टिंग दैट वेंडर, the घर उस तरीके से तरीका है। Now given that we know this, क्या I'm saying क्या हमारे मूवमेंट के बीच, जो वेंडर्स के मूवमेंट, उसकी क्या ये एक्नॉलेजमेंट की वजह से कोई डिमांड आ रहा है? Is what the is a claim to housing coming from worker federations like vendor federation? Yeah, are we still focusing on vendor federation, vending space, vending zone, complete streets के लिए लड़ रही है एक तरीके से, fighting for that right? Are we able to? I'm asking Arvind's question एक तरीके से, कि are we able to say कि as vendor organization, as domestic work unions, as home-based work federation, हम housing मांग रहे हैं, हम सिर्फ wages नहीं मांग रहे, हम सिर्फ vending space नहीं मांग रहे, हम सिर्फ minimum wage नहीं मांग रहे, are we able to ask for housing from the position of being worker? This is the question I want to ask you, कि क्या ये momentum आपको दिखता है, क्या ये हो सकता है, क्या आपके नजरिए में ये और होना चाहिए? What is your sense from within vending space? गौतम भाई, मतलब अभी तो फोकस ऑब्वियसली सर्वे और सर्टिफिकेशन, लाइसेंस, वेंडिंग जोन्स, इस पे ही है। लेकिन निश्चित रूप से साथ ही साथ ये लंबी पुरानी डिमांड रही है वर्कर्स मूवमेंट की, स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशंस की भी, हम लोगों की भी, कि जो पब्लिक हाउसिंग स्कीम्स फ्रेम की गई थी, लॉन्च की गई थी, फॉर एग्जांपल राजीव गांधी आवास योजना, राजीव रतन आवास योजना, तो उसके अंदर भी ये डिमांड उठी थी हम लोगों की तरफ से और कई अलग संगठनों से भी, कि उसके अंदर रिजर्व किया जाए फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। तो ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं उठी है, उठी है, लेकिन हाँ, वो टॉप मोस्ट फोकस नहीं रहा है, क्योंकि फिलहाल वेंडर अपने लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रंट एंड पे ही फोकस कर रहे हैं। लेकिन बैक एंड को उस तरह से ऐसा भी नहीं कि इग्नोर किया हुआ है, मतलब दैट इज देयर ऑन देयर माइंड, दैट इज ऑन द डिमांड, एंड दे हैड बीन डिमांडिंग फॉर लॉन्ग certain reservation for certain occupational groups under the public housing scheme like Rajiv Ratan Yojana. धर्मेंद्र भाई, आपकी बात से जोड़ते हुए, actually we should make or at least who are we making these claims to? तो एक जब हम complete street की बात कर रहे हैं, we are making a claim to public space, and public space management is directly under the purview of the state, the local state or the country. But housing is something from which the state stepped back in the late 80s. So it's very difficult to make a claim to housing if your employment is not found. हमको पकड़ना पड़ेगा और ये वो करना पड़ेगा कि इनफॉर्मेलिटी और लाइवलीहुड बहुत समय के लिए रहने वाली है, और कोविड से अगर ये सही दिखाया है तो मतलब गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट, ये गवर्नमेंट का पोजीशन और रिस्पांसिबिलिटी हाउसिंग में एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि नहीं कर सकते हमें बेटर हाउसिंग। This goes back to that question. Let me bring Tikender actually exactly on this question.
Sikandar, are you able to hear me? आपको अब हमारी आवाज आ रही है? फर्स्ट क्लास आ रही है, लेकिन मेरी आ रही है कि नहीं, क्योंकि टेस्ट नहीं हुआ था ऑडियो। आप शक्ल भी दिखा रहे हो कि नहीं? अरे देखो भाई, आप अपनी दिखाओ ना, मुझे तो थोड़ा बहुत अरे हम तो मतलब हॉल में है शक्ल दिखाने के लिए, हम तो आपको हॉल भी दिखा देंगे शक्ल की। क्या नहीं यार, वो मतलब मजा नहीं आ रहा देखने का, एक बंदा दिखे ना, बहुत दूर से दिख रहा है। एनीवे ठीक है। नहीं नहीं, हमारा टेक बहुत फिक्स्ड है, तो स्पेशली मोबाइल नहीं है मेट्रो की तरह, तो ये जूम हो सकता है जो आपकी बात। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। तो सिकंदर, जो ये जो सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं कि ये डिमांड किसको है, राइट, एंड कैन देयर बी अ डिमांड टू द स्टेट, राइट, या इफेक्टिवली आर वी रियली टॉकिंग अबाउट रेंटल मार्केट कितना दे सकता है, एम्प्लॉयर डायरेक्ट एम्प्लॉयर प्रोविजन तो हमने 20 सालों में देखा नहीं। इनफैक्ट व्हाट फनी इज कि आईटी वर्कर्स को हाउसिंग अलाउंस मिल जाती है, मगर आउटसाइड दैट वेरी स्मॉल सेट ऑफ फॉर्मल वर्कर्स, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू हाउसिंग सीम्स टू बी लाइक feels nostalgic to talk about it, right? The days of building worker housing was building stalls, building what are called bataras in Bangalore. We're not seeing these forms. जो workers हैं वो informal settlements में rent कर रहे हैं, urban villages में absorb हो रहे हैं. They're not entering formal housing like that. You've been part of the municipal corporation. You've been part of government, and there are two perspectives I wanted to hear from you. One is, what do you see as the role of this as of the state? Are we providing? Are we trying to regulate the rental market? क्या हम कुछ incentive देना चाहते हैं? क्या हम employers को responsibility एक mandate की तरह दे सकते हैं? क्या हम public schemes में employment categories, धर्मेंद्र को इंदिरा तक आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में specific worker reservation? Yeah, earlier Nidhi and Arvind was saying, when we look at informal settlements, unki employment map karo, distinguish between a waste pickers colony or a colony with home-based work, and be specific. So what can you see the state doing? In your experience, what were the municipalities and local government, state governments thinking of doing? First, and the second thing I really like you to also talk about is, गौतम, I'll forget. मेरे को पहले पहला वाला बोलने दो। फिर I'll come to Shimla, because I also want to talk about not just the big cities, but the labor dynamics, छोटे शहर जहाँ और same fight नहीं है. So let's take this first question. Okay. And how do you want me to address, English or हिंदी में? हिंदी में ज़्यादा बढ़िया है ना, सब लोग हैं हिंदी वाले? We have requests for both. We have both. Okay. Okay, fine. Okay, fine. From other WBC chapters. So keep on and a little bit more towards the English is okay. वो हिंदी में हम पकड़ के करें. Okay, okay, Gautam. So I think मेरा एक टूक आंसर ये है कि the state is in a literally a withdrawal stage. मतलब वो कुछ भी खासकर हाउसिंग के सवाल पर तो कुछ करने को तैयारी नहीं है, पहली बात तो ये है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि, और आपने कहा ही है कि 20 साल में कुछ दिखा नहीं है एम्प्लॉयर की तरफ से, और मैं एक चीज सोच रहा था कि मैं क्या बोलूंगा, मैं 4 बातें बोलना चाहूंगा, और शायद उसी में ही गौतम, आई थिंक आई विल ट्राई टू एड्रेस दिस क्वेश्चन, और वो अपने अनुभव से मैं बोलना चाहूंगा, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। द फर्स्ट इंस्टेंस एंड एग्जांपल कम्स फ्रॉम भाखड़ा, व्हिच व्हेन आई वाज नॉट बीन बोर्न, 1960s। मैं क्यों भाखड़ा बोलता हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट जब एसएफआई करता था तो ये ऊना नंगल में बहुत ज्यादा जाता था, और हम अभी भी जो 1960 में घर बने थे उन्हीं घरों में रहते हैं जो वर्कर्स के लिए घर बने। 800 मेगावाट का भाखड़ा बना, 1500, और ये भाखड़ा है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, पंजाब एल्कलीज, ये नंगल टाउनशिप जानी जाती 3 इंडस्ट्री से, और बेशुमार घर बना के रखे, अभी भी वो घर इस्तेमाल होते हैं ऑफ कोर्स। लेकिन ये यूफोरिया या नॉस्टैल्जिया ये रहेगा, क्योंकि हमने वो देखा है, हम देख रहे हैं अभी। मुझे लगता है वो तो कभी भी आंख बंद करके छोड़नी नहीं चाहिए, वो डिमांड लड़ते रहना चाहिए, कब होगा हम कह नहीं सकते, लेकिन हासिल हुआ है, वो भी हासिल किया है। फिर मैं जंप करता हूँ नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसमें मैंने यूनियन में काम किया है, मतलब मैंने उसमें जब वो संगठन था उसके अंदर काम किया है, नए नए यूनिवर्सिटी से हम लोग निकले, तो वो सो कॉल्ड हमारी प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड आंदोलन का नाथपा झाकड़ी में हुआ। 1500 मेगावाट, 2 गुना ज्यादा, लेकिन हाउसिंग क्या था, लिटरली शेल्टर, लेकिन बना कर देने पड़े, क्योंकि आपको वर्कर चाहिए, वर्कर वहां पर चाहिए था, तो बुनियादी सारी सुविधाएं, लेकिन वो टिन शेड जो घर थे उसके बाद वो घर बने। हालांकि ये फॉर्मल स्ट्रक्चर का पार्ट है, इनफॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल तो बहुत ही बुरी हालत है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो पूरे खत्म हो गए। आज आप नाथपा में जाएंगे, नाथपा और झाकड़ी जो पूरा सतलुज का बेसिन है, वहां पर वो जो वर्कर के लिए घर है वो सब गायब हैं, जो थोड़ा मतलब बाबू क्लास और उसने जो किया उनके लिए वो घर अभी भी बरकरार हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं, जबकि 2 गुना ज्यादा बिजली हम पैदा कर रहे हैं। ऑफकोर्स भाखड़ा जब बना तो उसकी नहर भी थी और भी बहुत सारा था, उसमें वर्कर जो स्ट्रेंथ थी ऑलमोस्ट 6 गुना ज्यादा थी जो नाथपा झाकड़ी में है। लेकिन हम ये ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन देख रहे हैं, और इसलिए वो नॉस्टैल्जिया भी बार बार आता है, और अभी भी हम उसको सामने देख रहे हैं।
दूसरी बात है कि जो आपने कही कि हो सकता है, मुझे लगता है थोड़ा हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट के साथ आप थोड़ा अगर झगड़ेंगे नहीं तो, और वो मेरे इंस्टेंस, और वो भी अब हमारे अनुभव से आ रहा है जिस यूनियन में मैं काम किया हूँ, और वो है शोलापुर की बीड़ी वर्कर्स। मतलब वो 10,000 घर बनाकर अभी, और वो मतलब क्या घर है, मतलब वो भी एक मॉडल है देखने लायक, और अभी 10,000 और की तैयारी है। वो है स्टेट के साथ एंगेजमेंट के सवाल को लेकर, और जिसमें एक शेयर वर्कर से आया, एक शेयर सरकार से आया, एक शेयर वो एक्ट के थ्रू वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से आया। लेकिन कमाल के घर है, मतलब वो भी हम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हम नहीं देखते हैं। और तीसरी बात है, मैं जो समझता हूँ कि आज के परिवेश में मुझे लगता है गौतम के वो जो हम बात 1970, 80 या फिर 90, 2000 के बात कर रहे हैं, एक बड़ा कंपोनेंट ये है, जो कंपोनेंट जो हम, जैसा आपने भी, मैंने आपको सुना था एक बार बोलते हुए कि वो हमारी इमेजिनेशन में नहीं था। वर्क हाउसिंग राइट है, वो हमेशा रहना चाहिए हमारे दिमाग में, उस राइट के आधार पर हमें बिल्ड करनी चाहिए आंदोलन मूवमेंट। लेकिन रेंटल भी एक अधिकार हो सकता है, और रेंटल के सवाल, और उसका एग्जाम्पल हम देखते हैं हिमाचल के अंदर, जो फार्मास्यूटिकल में एशिया का हब बना, मतलब कितना पैसा, मतलब कितना जीडीपी में ग्रोथ हुई, वो है बद्दी और बुरोटी वाला। सत्यानाश है बिल्कुल, अगर मैं इसको कहूं, इट्स कंप्लीट डिजास्टर इफ यू से नो, इट्स the entire housing comes from informal sector. Nothing comes from the formal sector, and you won't believe. It was shocking for me when we went there that the same premise is being used by multiple people in different time period of the day. Can you believe that, बाबू? कि दिन में कोई और सो रहा है, तो रात की शिफ्ट कर रहा है, और रात को कोई और सो रहा है, और इसीलिए मैं वो बोल रहा हूँ, भाखड़ा भी हमने देखा है। तो आई थिंक ये जो एक मतलब हमारा अनुभव है कि ये कैसे फोर्स कर सकते हैं, और इसको कैसे क्योंकि इसमें जितने भी वहां इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इतना ज्यादा कॉन्शियसनेस है कि हाउसिंग कहीं क्वेश्चन ही नहीं। मैं अभी धर्मेंद्र जी को सुन रहा था, क्योंकि जब ये स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट वगैरह बने, मुझे नहीं लगता हमारे जहन में भी, खासकर हम लोग जब ये स्ट्रीट वेंडिंग की बात कर रहे थे, हाउसिंग उस तरह से क्वेश्चन भी था स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो इसका पहलू है कि ये जो रेंटल हाउसिंग और लेबर हॉस्टल्स, आई थिंक गौतम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ा सेक्शन जो इतनी इनफॉर्मेलिटी हो गई है शहर में, इतना इनफॉर्मल सेक्टर है, और उसमें उनको घर नहीं चाहिए, मतलब उनको अपने घर नहीं, उनको अगर लेबर हॉस्टल मिलेंगे, बड़ा सेक्शन है जो कि आते हैं और वापस अपने गांव जाना चाहेंगे, या किसी और शहर से जहां से आए वहां जाना चाहेंगे, तो उनको जरूरत है, व्हाट दे रिक्वायर इज डिसेंट हाउसिंग in the form of labor hostels. And I don't think that we have many examples, but if you come back to me on Simla, I think I would like to share that. I don't want to put Kerala here because Kerala is altogether a different ball game. लेकिन शिमला का डेफिनेटली ये है। और एक आपने जो कहा कि लोकल गवर्नमेंट्स का जो इसमें रोल है, अनफॉर्चुनेटली बहुत कम रोल है। मतलब वो सिर्फ बहुत ही ज्यादा वर्टिकल है, लेटरल कुछ दिखता नहीं है। PMAY आ गया, राजीव आवास योजना आ गई, और इसमें कितना कास्ट ओरिएंटेड हाउसिंग में डिफरेंशिएशन है। मतलब मैं शिमला का आपको उदाहरण बता सकता हूँ। जब ये हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर के लिए हाउसिंग बना रहे थे, एक पहाड़ी जिस पर हम लोगों ने बनाना था, टू चेंज द साइट फॉर द सिंपल रीजन, क्योंकि वो यहाँ पर आपको पता है हिमाचल में ये देवताओं का इसको राज्य बताते हैं, और शिमला में जिस पहाड़ी पर बना था उसको देवूधार बोलते हैं। तो वहां पर दोनों काउंसलर जो दोनों I don't want to name the party, but in fact both are again leading city leaders. They didn't allow us to construct that housing there for the simple reason because उन्होंने कहा कि ये तो दलित आएंगे, और एक मतलब देवता के पहाड़ पर आप दलित नहीं, तो then we have to shift it. Like, can you believe? मतलब ऐसी चीजें भी बहुत सारी हैं। Anyway, I don't think that is part, but just put that. Can you believe? I think it is foundational. I think that one of the questions that we have to ask is that one of the discussions, I'm very glad you brought it up, because the core part, we are facing these three joint fights. A very financialized land and housing market. Right? So the commodification हमारा land बहुत intense है। इसका मतलब है कि पहले जो एटलीस्ट कहीं आजकल तो इनफैक्ट नई बस्ती बनाने में बहुत मुश्किल है। Right? We are not seeing new settlements. We are not seeing, because the land value changes in the last 20 years mean real estate का जो land and housing उसको हम financialization कहते हैं, मतलब कहीं की भी entry बहुत मुश्किल हो गई। The second is that उसी land market में identity based discrimination उस market का foundation है।
whether that is on caste or religion or gender or migration or language, and usually an insidious combination of all of these three things. So हमारा rental market में identity based discrimination साफ दिखती है, हमारे informal settlement एक Arvind was saying earlier, informal settlements have to be looked at through the lens of इसमें employment क्या है. The other question we have to again ask is the identity की geography क्या है, because that connection is also very strong. Rental market demand or supply पे नहीं चलते हैं लोग. They work on very strong caste and kinship connection. They work on very strong gender and religious connection. And हमारा ये सबसे एक बहुत मुश्किल बात है कि इंडिया में there is no anti-discrimination law for private renters. तो मतलब अगर मैं आपको private landlord होके आपके मुंह पे बोलूं कि मैं आपको किराए पे दुकान नहीं दूंगा, घर नहीं दूंगा क्योंकि आप X, Y और Z हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट नहीं कर सकते. We don't have an anti-discrimination law. So in a way there is also a huge legal lacunae कि एक तरह से अगर हम rental market के importance को बार-बार हम underline कर रहे हैं that we will have to do better with rental housing because majority of workers are in arrangements of rent. Sometimes because like Kedar is saying, वो ownership नहीं चाहते, वो रहना नहीं चाहते, वो flexibility चाहते हैं. Sometimes like domestic workers that they have no choice. It's not that they're mobile and migratory. तो अभी अनिता जी chat में डाल दी थी अगर वो है मैं बोलूँगा उनको बोलने के लिए. But I want to reiterate the point कि domestic workers ने जब हमने जयपुर में study लॉकडाउन के एंड में 10,000 रुपए किराए के साथ निकले थे domestic उसमें से 7,500 रुपए किराया. The 10,000 rupee debt at the end of lockdown last year, 7,500 rupees was spent, right? And जब लोगों की बात हो रही थी, जब स्वान ने वो रिपोर्ट्स किए थे माइग्रेंट वर्कर्स के साथ हाईवेज पे कि आप क्यों छोड़ के जा रहे हो लॉकडाउन के दौरान, इतना रिस्क क्यों ले रहे हो, 41% answered then. It was not employment or wages or COVID or health, it was rent. So in many cases, you know, Ajivika report की बहुत details हैं, migrant workers for Surat talking about rental conditions, migrant conditions, there's a multiple kind of cases, right? So मगर उसी rental market में regulation नहीं है, discrimination protection नहीं है, कोई तरीके से minimum हमारे पास तो record ही नहीं है कि rent है कहाँ और कौन rent कर रहा है, right? So statistically 2% of rental agreements in India are registered. 11% of all rent has any written agreement. मतलब elite rental जो हम अपने खुद का residential बोले उसी में agreement नहीं, let alone a majority of the rent. So I think there's and दूसरी तरफ one of the things that we're struggling with, like you're saying, is we cannot withdraw from demanding from the state. There's no question of withdrawal, but we also have to think about what we should ask from the state and what it can do. And this question you're saying municipal or city or local sarkar hai, it is not able to intervene into. Housing has remained in the control of state government. Land has remained in control of state government. We have seen our own experience in Delhi in the negativity campaign, how difficult it is to, we cannot approach our elected governments. We have to keep thinking a little bit about discussions around, we also have to negotiate with the development authority, an authority we don't vote for, right? We cannot argue around the same way. So housing एक तरीके से definitely confound कर देता है हमारे known strategies and organizing ways. And these divisions between the अलग-अलग types of work में अलग-अलग divisions होती हैं, I think are really important. I want to come back a little bit to Mukta on suggestions for how to think about regulating rental housing. Agree in a minute, but just before that, Arvind, if you're still on the call, I'd like to ask you to respond to. Go ahead. Gautam, I just want to point out. I don't know whether you'll come back to me on the labor hostel issue, but I think the functioning of the labor hostel is also very important. Who will run these labor hostels? I mean, if we just keep these, okay, or maybe you just go to Arvind, then probably I'll. And also on the question of regulation, you know, when we allow, take for example, Baddi Baroti wala, what could have been one of the interventions is that when you are allowing this capital to come in, why couldn't we have just also asserted that, look, this amount of capital has to go for housing, and you know, maybe you just take housing on rent, or you construct those houses. That could have been done, but this is not part of the imagination, even of the workers' movement. That's what I wanted to say. I think यही बात we've been asking, right? This was I was going back to Arvind actually on this point only, that it seems to be again this question of हमारे claims भी बढ़ गए between housing rights and worker rights. We're not able to articulate how to claim housing as workers, but also
connections हमें जोड़ने हैं दोनों तरफ, I think are really important. Arvind, I just want you to come in on some of the experiences around, so much of the work IGP Plus does is around negotiating with government. You try to intervene into manifestos. Yuva has done so much work historically on negotiating with government. I wanted to just ask you guys to reflect on this question ki, ab bahut jar even though the state is not willing to do certain kinds of housing, post-COVID, the talk of migrant worker housing, dormitories, labor hostels, ये actually bumper circulation है आगे. There's a lot of talk about it. I'm not even talking about Kerala's example. I'm saying in general, this question is now back on the political agenda. Where are workers supposed to live? In this post-COVID moment, right? I wanted to ask you, Arvind, if you had any reflections on this question of new forms of housing that are not family-based or ownership-based, right? That are based for workers that may be mobile, that may be temporary, that may be cyclical, that may be migrant. So are we talking about migrant hostels, working hostels, labor hostels, dormitory-style housing, modular housing? What are some of the experiences in which we're saying there is also a non-1 BHK affordable housing PWS Janta flat model. There is a worker housing model. Can we take advantage of this political moment? कुछ हवा में मौका लग रहा है. If so, what should we be saying at this time? जब थोड़ा सा there is some beat to the fire. Mukta come to you after this saying rent के लिए हमें क्या मानना चाहिए? What intervention do we want into rental housing at this time? जी गौतम, आई थिंक बहुत वाजिब सवाल है, पर इसमें मुझे लगता है कि एक जो डायरेक्शन, अब देखिए माइग्रेंट वर्कर्स का हाउसिंग एंड माइग्रेंट हाउसिंग स्पेशली वर्कर हॉस्टल्स, इस सब का कितना मटेरियलाइज होगा मुझे पता नहीं, बट जो आत्मनिर्भरता की जिस हिसाब से हमारे देश में भी बात चल रही है, इट इज वेरी लाइकली दैट ऑल ऑफ दिस इज नॉट गोइंग to get implemented at any level in the coming for so many years. There's a high likelihood of that happening. That will mean कि हमारे social movements को जैसे नए तरीके अपनाने पड़ेंगे कि भाई अब अपने नए claims जो हैं अपने शहरों में कैसे बनाएं. अब वो कैसे कर सकते हैं, उसकी शायद अलग अलग रास्ते होते हैं. शलाका एक टाइम पे हम दोनों शायद ये मास्टर प्लान को लेके घूम रहे थे, तो शायद हमको ऐसा हो सकता है कि मास्टर प्लान में देखना पड़े कि कौन से जमीन को आगे हड़प सकते हैं, कौन से जमीन को आगे कैप्चर कर सकते हैं, ताकि ये जो हमारे क्लेम मेकिंग है वो चलता रहे, क्योंकि सरकार आगे कुछ नहीं करने वाली है as far as our take is. So that is a challenge. पर इसमें भी अगर थोड़ा पॉजिटिव देखें, I mean some of the things that we can work on or think of is to, okay, the other thing possibly could be that a lot of discourse has changed. You have these new schemes coming up. You have this even in our draft master plan for Delhi 2041, you have at least a definition of rental housing and a little bit of elaboration on what is rental housing imagined to be. You have a one-liner definition on what is worker housing, for instance. पर इन चीजों को अगर आपने कहीं पे हासिल करना है या implement करना है, you need to have space, land, allocations, norms, so on and so forth, made into city planning, urban planning, and that transition has still not happened. So I have also kind of glanced through Tikender ji's writing and many others who have commented on the affordable rental housing scheme. देखिए वो स्कीम तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक आपके शहरों के नक्शों में इसके लिए एक्चुअल एलोकेशंस और रिजर्वेशंस नहीं होंगे. वरना क्या होगा कि वर्कर्स का नुकसान ही होगा, या वर्कर्स के नाम पे जो बाहर वाले फ्लैट्स हैं अंडर द फर्स्ट कैटेगरी, उस पे वर्कर्स डाले जाएंगे. एंड उसका यूज तो आप जानते हैं, पिछले 5-6 साल से डीडीए हर बार उसको डीडीए के हाउसिंग के उस पे हाउसिंग स्कीम में रखती है और वो अनसोल्ड होके फिर से वापस आ जाते हैं. तो आई मीन दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, एंड इफ इट एक्चुअली गेट्स इम्प्लीमेंटेड, वी डोंट नो हु गेट्स पुट देयर and what happens to them and what happens to their livelihood, so on and so forth. So this is actually a challenge for us also कि how do we deal with it. But planning में मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि ये जो one liners और हमको थोड़े बहुत sentences that we have managed to get into the draft master plan of 2041, uske really look into, what are the actual allocations, what are the land parcels being given, and how do we
break open the spectrum of housing from plotted housing to shelter. उसके बीच में 10 चीजें हैं that we are supposed to do, which is not there in our cities at the moment. So how do we kind of do that? वरना क्या होगा कि ये EWS, LIG, MIG और HIG के बीच में DDA would be more than happy to do, 1,000 flats a year, and of that 1,600, 800 being MIG and the rest being LIG. So that is the kind of trend that is very visible. So going forward, I think we have to, as folks here, as social movements, we have to really think of how do we get our claims and identify where do we want to kind of grow as informal settlements on one side. On the other side, agar ye policy schemes implement hone bhi hain, it will require a huge sort of change in how cities are planned, designed, land allocations, land parcels. Going by the 2041 trend, it is very clear that DDA is not going to do much, nor have they allocated much in the 2041 master plan. तो अगर नक्शे में नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि उसको implement कराना उतना ही मुश्किल हो जाता है. तो ये मैं शायद थोड़े points रखना चाह रहा हूँ. गौतम का सवाल, गौतम asked me about rental housing. Hello everyone, can you all hear me? Yeah. Elizabeth, is that you? Yeah, we can hear you. Yes, yeah. Yeah, actually I had very sorry that I had in between a very bad connection. I could not come and my laptop had some issues again with the application, so I was not able to connect on time. No worry, no worry. Just give me a minute. I'll just come to you, Elizabeth. Sure. Gupta was just finishing a thought on rental housing, and then I'll just come to you next. Sure. So I think rental housing is at an interesting place right now, because as we know from this Najma versus JNCB case, the landlord and the tenants have got together to go against the state. And what that tells us is that landlords are as stressed as the tenants. So informal rental में ये मुद्दा है कि traditionally हमने landlords को exploiters और tenants को exploited के नजरिए से देखा है, लेकिन जहाँ small scale landlords की बात होती है, ये necessarily सच नहीं है. वो दोनों ही एक informal settlement में हैं, वो दोनों ही depredation deal करती है. Of course, my tenant और landlord में एक power equation की inequality रहती है. The landlord has certain is a local, has political power compared to tenant, but इस वक्त I think ये opportunity है informal rental में model tenancy act जैसे instrument को बहुत ही simplify करके, बहुत ही basic level पे ले जाके और बहुत ही localize, हम SDGs की localization की बात कर रहे हैं हर जगह, तो हम tenancy act या tenancy regulation की localization की बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हर जगह की जो डायनामिक्स है वो अलग है. एंड सिकंदर की बात से जोड़ते हुए, unless we have local government getting into the mess of this, so a place like Gurgaon and a place like an industrial small town will have a different dynamic. Industrial small town में rental market नहीं है, private rental market नहीं है, तो अगर आप वहाँ जाओगे आप देखोगे actually employer घुसता है housing में, क्योंकि अगर employer housing में नहीं घुसेगा तो worker ही नहीं होगा वहाँ पे. And dynamic there is non-migrant worker, migrant worker से बहुत जल्दी, क्योंकि migrant worker को घर, बिजली, पानी दिया जाता है. Of course, there are other discriminations and other problems that migrant workers will face, but that's a very different dynamic from a big city like Delhi, where the workers may be staying in informal rentals. So there is a possibility right now, I think, to push that, okay, a tenancy act is coming from a very different provocation. It's coming from an 11 million vacant homes and a long, rent control and an imagination of an elite or at least middle class rental situation. So it is not thinking of the informal rental market right now. It's thinking that is out of the purview. But the majority of the rental market is informal. Like you said, Gautam, even better income, even higher income, people who are paying 20, 25, 30,000 rent per month don't have written contract. And the reason for that is because a non-written contract is simply more convenient.
It's not because it is more exploitative. It's simply because it's easier for me to deal with it both as the tenant and the landlord if I don't have to go through a very complicated mechanism. So to localize this and to make arrangements or make contracts really simple so that they can be registered in some form. They can be listed at least in some database. And then to support local landlords to actually improve settlement level support as well as think of them as businesses and support them as entrepreneurs and businesses. Because there is a cascading effect. The world over, we know that housing is a cascading investment. If you invest in housing, then you are also thinking about consumption of very different things. So think of it as an investment in that sense rather than that's how we need to position this as a even as a worker issue. अगर हम ये मुद्दा कर रहे हैं आगे के रेंट को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को ये बोलना पड़ेगा कि केवल वर्कर को नहीं जो वर्कर को घर किराए पे दे रहा है उसको भी तो फायदा हो रहा है इसका तो ये जो आई थिंक कॉन्वर्सेशन है ये बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हुआ है And also to know that in the bottom 25%, we also know that landlords are not that different economically from renters. It's no, not the some only notion of difference is the social power. it's the social power. Absolutely. But economically, for many low-income landlords, the rent is the only source of their income. These are often women-headed households. These are also single-earner households. So there is also a sense that there is a distinction power for sure. मगर ऐसा भी नहीं है कि this is the sense of that landlord of the cinematic notion of an asset owner, पूंजीवादी, etc. That happens at the upper end of the rental market. In fact, in the entire bottom quarter, there is very little difference between a tenant and a landlord in terms of asset ownership. तो अगर आप बस्ती के अंदर वो rental सोच रहे हो, right? Giving a landlord subsidy, for example, is also working with someone who is likely also a worker. It's not that they remain only a landlord in that manner. But I think it's a very useful way to put together कि ये relationship को recognize अलग तरीके से करना है हमको इसको एक तरीके से not just in terms of public rental housing but regulating the rental incentivizing the rental housing market at a certain structure we have to think about. I wanted to come in and I'm going to ask we're at 4:30. I wanted to come to Elizabeth on questions specifically of domestic workers and housing. And also then to be able to open it up to other people with ideas about what are the ideas that they would like to put forth and how work and housing should be put in. I know many things have come in on chat. I hope we can't see them here, but they keep coming through. So if folks outside could also get ready and we use the raise hand function on Zoom and ask for call. So I'm just going to ask Elizabeth to come in and then Sharaka has a couple of questions around homelessness that we want to pick up and then we'll open it up to everybody. Yeah. So Elizabeth, if we can just ask you now, we've been talking so far on this connection between work, worker and housing. And we had an initial thing, Anita just started speaking about the connection that the domestic workers, our relationship to housing is also very specific because unko paas wale ghar mein, they have to be able to travel and walk to multiple houses, right? So एक तरीके से जिस तरीके से वो rent pay करती हैं, वो other workers से comparatively disproportionately higher rent is paid by domestic workers because they have to live next to middle class colonies. So there's a very strong link here between mobility, transport infrastructure, housing. So in your experience in Gurgaon, and Mukta has started talking to us about migrant workers in Gurgaon as well and looking at the rental economy. What are the ways in which housing for domestic workers comes together for you? And as a domestic workers union, are there ways in which you've been trying to talk about the housing issue and not just about wages and workplace conditions and more traditional ways of workers? Hi, Gautam. You were addressing this to me? Yes, you. Your experience. Okay. In between. So I would like to say, first of all, is this sorry to everyone because of a bad connection and then some technical issues. Regarding the housing facilities in Gurugram or in other parts of like NCR of Haryana where we are working, what we have seen is that especially the informal workers and the domestic workers are all clubbed or stay together in urban villages where they have to pay a certain amount of
rent amount, where it depends from little bit higher side to a lower side, depending upon whether it's a kind of a slum dwelling type or a 1 room, 8 square feet room. So the concern here is that in all the like planning or in concerns about these settlements, I do not think anybody has given that much of paid attention even till today. Of course, there was once a call 5 to 6 years ago by the Haryana State Industry and Infrastructural Corporation, but that was related to industry owners, because when the talks regarding housing was being talked about, they were asking the industry owners to especially buy certain part, and then they started building certain building where the workers or the laborers can stay who were working in their factories and companies. And the structure is still there today. It stands in IMT Manesar till today. The question now is that, and yes, it's related to the industry, and alongside this industry also, domestic workers, they all stay, whether it's Manesar in the main industrial area, whether it is Gurugram in the cyber hub or cyber city, or the Udyog Vihar industrial area. So the thing is, what we were saying is that slowly, when these urban hamlets are being occupied now, not as an urban village as per se, this thing is like a workers' colony only. And when we are asking about the informal settlements where workers stay, for example, is the distinct area where the marble market, which is located in the Aravali area in the Gurugram, where all the workers stay. It's a green belt, but the workers have been, and other migrants have been staying in that area for the last 30 years. And they have been many times tried to get evicted, but still they came back, and then the workers have been staying. They have their voter card, or even they have their Aadhaar card being made in this local area. And the demand has been that please identify a certain area where these workers can stay, a space to stay, that if they are trying to say the workers to leave that area before that. Even I think court case is also going there. But this thing has not been marked. But if we refer to a government agency, or regarding when we are talking about informal workers, everybody in their mouth points out where the workers stay. But the issue now is that Gurugram is now talking, and in certain terms, about private-public partnership in certain measures also. So why we do not, if HSID, IFC is able to point out, to take up certain initiatives, why? Because the political economy of the workers are very much contributing to the gross domestic production in the area. Why this thing has not been, question has been raised. Even as an organization, housing as a right, we were not that vocal in raising this issue, that we know about it. But we now have to raise it. And another issue where ghetto colonies, or where the residential societies are very much there in Gurugram. Every society, there is a building which is marked or which is reserved for affordable, or for those who are below the poverty line. There are many such societies in which this area, especially this building portion, has been remaining empty, and no one has occupied it so far. So why not, under this public-private partnership, the buildings which are empty there since the last 10 years, 15 years, 20 years, why could not they rent out to the family of the domestic workers who are working in that society? We have a particular case in which this was happened out of humanity in a certain sector in Gurugram, where the housing society has not completed yet. But certain portion of the building, because the workers can stay and work like that, that's why the resident association has allowed certain workers to stay inside this building for almost nearly 505 years. And suddenly, in the first wave of the pandemic, when it happened, and most of the domestic workers and their husbands who were working as construction laborers in that particular society, they have been staying there for nearly 5 years, and then you have to go now.
So this issue was particularly brought up, and then we asked like to the contractor who had requested to the RWA that during the time of his need, when he need to make the workers stay in the society at this time, why the workers needs to be kicked out during this pandemic time. This was the issue that was raised in April last year during the heights of lockdown in Gurugram also, as per the national lockdown. And there was negotiation took place, and then on behalf of the worker, the contractor of that particular society where the works are going on, they requested the RWA, and they said that till the workers have time to manage their own way of settlement, please allow them to stay in that particular building where they have been staying for the last 5 years. So this has been the thing. So now question is, when the RWAs were following very strictly every dictate of the authority of the Gurugram in abiding the guidelines of the COVID-19. And in certain measures, when we were associating and talking about certain other issues of the domestic workers, about wages, about providing bathroom facilities for the domestic workers in the residential society, at that time, they were saying that if the authority or the government authority says something, we have to abide by it. We can even open a craze in a residential society. So I know that a buck passed from the government authority side to the RWA side also. But the thing is that the question now, we as a group, if we can do or speak up something about is that why don't we give at a cheaper rental? If not, they are allowed to like occupy that area in the housing society. Why is affordable housing always been reserved but never has been given to that category? Why not that area be considered as one of the settlements for worker? This is something that if in future, if we ask, maybe somewhere we can have a point in negotiating. Maybe it may look a far-flung, but sometimes it can happen. And especially we want to ask also, we want to go forward for all the informal settlements, the Jugi type settlement we have, where the government can mark at least an area where these workers can stay. Even if they build their own housing in their own way, at least they have a certain kind of a settlement. Thanks so much, Elizabeth. That's a really powerful intervention. And three separate things you spoke about. Bringing vacant housing back into circulation. This has been a long-standing demand of housing policy, not only worker policy. Second is the question of reserving particular points of land. Arvind talked about this, Mukta talked about this, the Medilli campaign claim. And the third is to take what you were describing as the inclusionary zoning, like 15% reserved EWS flats, 15% reserved EWS housing within private development, to implement that and to use it in many ways. And Gurgaon, of course, sees a lot more of this because the nature of Gurgaon's urbanization is around private educated societies. So that 15% reservation, but this is the model in the new Delhi Master Plan 2041 as well. So both vacancy, question of making land available, and reserving built housing, all three of them. And the question is then to link it to specific kinds of workers, and not just, again, we go back to this question, not just EWS housing, but worker housing. Not just low-income housing, but housing for workers. And I think this is a good time, Sharaka, we want to pick up, because one of the challenges also, for example, when you think of housing and need, this is one of the places where the question of work to bilkul hi ud jata hai when we talk about homeless shelter, right? Where the notion is entirely about shelter. Right? And Sharaka, you've been working a lot on this, not to call them night shelters. Think of talking about the homeless as workers. So do you want to pick up or ask one of our panelists to pick up one of the questions on homelessness and work? So, we would want to this out of this one. So homelessness की जो हम लोग बात करते हैं, हम लोग को इस बार Delhi Master Plan में भी होगा, जो draft Delhi Master Plan कैसे they have invisibilized this particular sector homeless. और कुछ उसके बारे में कुछ नहीं था, और जहाँ हम लोग देखते हैं कि NULM-SOH और पिछला मास्टर प्लान एक मिसाल था एक टाइम पे होमलेस के बारे में कुछ बातें की गई थी। इस बार सिर्फ उसी को कॉपी पेस्ट किया, तो ज़्यादा कुछ बातें नहीं है इस बार, क्योंकि बहुत ही थ्रेटनिंग, बहुत ही अलार्मिंग सबके लिए। तो
ये क्वेश्चन एक्चुअली धर्मेंद्र भाई के लिए भी और अरविंद के लिए भी, दोनों बहुत जुड़े हुए हैं दिल्ली कैंपेन से भी और होमलेसनेस के मुद्दे से भी। तो एक छोटी सी बात है, तो मुझे याद है IEEE से एक स्टडी बोलता है 2018 तक की दिल्ली में खासकर जो सबसे 80% जो होमलेस पॉपुलेशन है वो वर्कर्स है इनफॉर्मल इकोनॉमी में, पर सबके सब लोग अर्न करते हैं, 230 रुपए सब लोग रोजाना कमाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि होमलेस में, और सीजनल वर्कर्स भी है उसमें, तो ऐसा नहीं है कि आप बोलते हैं हर बार हमारे अधिकारी लोग कि अरे होमलेस तो मतलब बेगर्स है, ये काम नहीं करते, तो वो काम करते हैं। तो ये बात हमको पता है, और ये एक्चुअली क्वेश्चन है दोनों साथियों से, आप लोग अवेलेबल कि क्योंकि बहुत इन्वेस्टलाइज हो रहा है ये एक बड़ा मुद्दा, तो आप लोग कैसे देखते हैं आगे आने वाले सालों में, और कैसे इसका एडवोकेसी करने का कितना जरूरी है होमलेस का, जब हम लोग खासकर दिल्ली जो कि कैपिटल है जहाँ पे होमलेस पे इंक्लूसिव शेल्टर एक मिसाल है, किस्म का डिजाइन हुआ है, नंबर्स हैं, तो उस हिसाब से आप लोग दोनों साथी कैसे उस चीज को देखते हैं सवाल में। देखिए शलाका, जो शायद हमारी डिमांड रही है शेल्टर्स को लेके, वो एक चीज हमेशा से ये रही है कि देखिए कि शेल्टर्स अपने आप में कभी एक सॉल्यूशन थे नहीं, और उसको हम मानते भी नहीं है। पर अभी जो पूरा ये जो हाउसिंग स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे थे, उसमें शायद कहीं ना कहीं बिल्कुल एंड में ये होमलेस शेल्टर्स की कैटेगरी पड़ी हुई है। अब शेल्टर्स कुछ ऐसे भी, मतलब आपने ये आंकड़ा जरूर बताया कि 80%, 85% एक्चुअली वो वर्कर्स हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के हैं। पर इसमें भी वर्कर हैं बहुत सारे अनस्किल्ड, शायद अगर अनस्किल्ड मैं बोल सकता हूँ तो, पर पता नहीं कि क्योंकि डेफिनेटली उनके वेतन कम होते हैं, उनके पास आमदनी कम होती है, और एक बहुत बड़ा तबका उसमें एटलीस्ट जो दिल्ली में है वो सिंगल मैन का तबका है, बहुत बड़ा। मतलब ये नहीं है कि पूरा पूरा, बट आई थिंक ओवर 80% या इवन 90% जो है वो शायद सिंगल मैन है। ऐसा दूसरे शहरों में ऐसा नहीं है। एटलीस्ट दिल्ली के केस में यहाँ पे एक बहुत बड़ी जरूरत है कि आप शेल्टर्स के बाद जो स्ट्रीट हाउसिंग प्रोविजन जो सरकार कर रही है वो सीधा EWS है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो EWS शायद अभी जब DDA निकालती है तो पता नहीं, पिछली बार तो शायद 10 लाख 11 लाख 12 लाख के आपके मकान मिल रहे थे, और वो भी वहां पे मतलब जस्ट जो आमदनी के हिसाब से वो शायद मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल वर्कर्स और स्पेशली जो होमलेस वर्कर्स हैं उनके रीच से बाहर है। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है कि कैसे वर्कर्स को थोड़ा स्किल किया जाए, थोड़े उनकी और कैपेसिटीज बढ़ाए जाएं, ताकि वो शेल्टर्स में आए तो वो कुछ नई चीजें सीखते हुए और फिर अपनी जिंदगी को सुधारें और आगे बढ़े। आई थिंक ऐसा कोई प्रोविजन हमारे दिल्ली में कोशिश हो रही है, पर कोशिश से काम नहीं चलेगा, और आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे हॉस्टल्स लाने पड़ेंगे, ताकि आप जो होमलेस हैं उनको और स्किल और कैपेसिटेट करके उनको आगे भेजें, जिंदगी में आगे भेजें, और वो शायद हॉस्टल्स में रहें, आगे जाके रेंटल हाउसिंग में रहें, अपने फैमिलीज के साथ रहें। आई थिंक ये प्रोविजंस हमारे एग्जिस्टिंग ना एनयूएलएम एसयूएच में है, और ना कि हमारे पूरे शहर के प्लानिंग और निर्माण में। आई थिंक वो हमको सोचना चाहिए बहुत जल्दी, वरना आगे क्या हो रहा है कि एक और मैं डेटा बताता हूँ, स्टार्ट बताता हूँ, उसके बाद आपके हवाले माइक, कि हमारे उसमें ये भी था कि 50 से ज्यादा परसेंटेज जो लोग थे वो होमलेस शेल्टर्स में ही फंसे हुए थे। वो चाहते थे कि वो वहां से निकले, पर वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि रेंट भी दें, पर प्रॉब्लम ये है कि मैं बस्ती में भी कमरा नहीं ले सकता अपने लिए। एक्चुअली ये लोग अपनी तरफ से बात रख रहे थे। तो अभी हमारे पास 10-15 मिनट में, तो अगर हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कोई बात करनी है, if they would like to share something, some suggestions they have, some questions that they might have, so please, speakers are your, the question. The chat box में सकते हैं आप लोग, हाथ रेज कर सकते हैं. What would be very useful also is while people are putting ideas in chat, if I can go around once to folks saying if there is something that you would like to see happen, connecting these issues of work housing. Maybe if you want to put something, we'll go around. Tikendra will come to you right after that. Anyone start? So you're talking about what we expect the state to do. So
one thing which we did not talk about as much was how the plan talks about, let's say, various kinds of housing. I know we skimmed over it through various people have talked about it a little bit, but at least in the case of Delhi, the adherence to delineating separate zones is, I think, something that doesn't really work the way on ground things happen, specifically with respect to housing and new development, and specifically I'm talking about let's say home-based work happening in residential areas. The other thing I wanted to talk about was so it's interesting. I wanted to respond to what Elizabeth has talked about in Gurgaon and sort of talk about what happens in Jaipur is a little different in terms of domestic workers. So to think about domestic workers living not just in unplanned areas, but in Jaipur we found them living very close to planned colonies because domestic work is everywhere. So to really think about workers' housing is not separated into certain zones in that manner, but to think about it spatially more integrated. Vikinder, can I come to you? What would you like to see happening both for movement, for the state in general? Those things you're hoping to see in the next 4-5 years around these questions of both worker housing, all the constraints given, all the mushkilat given, all the difficulties given. Don't bring that consideration. I mean, the first part I would have said a house for everyone. Anyway, but I think Gautam, मुझे थोड़ा वो जो शिमला के लेबर हॉस्टल्स है ना उसके बारे में थोड़ा सा क्योंकि ये जो अरविंद इतना कंसर्न है कि बीच की बात और क्योंकि मुझे मौका मिला था दिल्ली में ये एसपीए में वो फाइनल ईयर को पढ़ाने का, तो वो एक बैच इस पे होमलेस शेल्टर पे काम कर रहा था और उनके प्राइमरी डेटा के हिसाब से 94% है जो कि वर्किंग पीपल है, जो 85% से ऊपर है ना। लेबर हॉस्टल इसलिए इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली ये हमने देखा है शिमला में जो करीब 100 साल से भी पुराने लेबर हॉस्टल्स हैं और फुली ऑक्यूपाइड हैं, बहुत अच्छी तरह से मेंटेन्ड है। तीसरी बात है कि लोकल बॉडीज उनको चलाती है और बहुत ही नॉमिनल रेंट लेती है। आई थिंक हमारे समय में 100 रुपया था महीने का, मतलब 3 रुपए पर डे उसमें पड़ता था। कौन कौन लोग हैं इसमें? कन्वेंशनली ब्रिटिश के टाइम से, क्योंकि ये लेबर हॉस्टल्स जो डिजाइन किए गए थे ये थे कश्मीरी पोर्टर्स के लिए, क्योंकि शिमला में सिर्फ 25% घर हैं जहां पर गाड़ी जाती है, बाकी सारा पीठ पे सामान जो फ्रेट है बेसिकली वो फ्रेट उठाने के लिए इंसान के पीठ पे ही जाता था और आज भी बाय लार्ज ऐसे ही है। तो इसलिए वो आज भी पोर्टर्स बड़ा सेक्शन ऑक्यूपाई करते हैं और अभी नया सेक्शन आ गया है जो कि इनफॉर्मल सेक्टर का जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं और हमारे दूसरे जो पेंट का काम करते हैं। और अगर आप देखेंगे मुझे लगता है कि हमारे जरूर लोगों को विजिट करना चाहिए, लेकिन उसमें यही मैं कहता हूँ, बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि रोल ऑफ द लोकल बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लेकिन दुर्भाग्य ये है जो आप कह रहे थे स्टेट का क्या रोल है। During our time, we sanctioned the budget for constructing 4 more labor hostels because there was this huge demand. And under the smart city also, we had put in that money for that. Unfortunately, everything that was not put in the smart city, we are finding because now we are off the city. तो वो उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन जो लेबर हॉस्टल्स है तो उसमें वो सारा साफ हो रहा है। आई थिंक दैट वी रियली हैव टू एंगेज। और इसमें एक बड़ा सेक्शन जो हम ये स्ट्रीट वेंडर्स का कह रहे थे, स्ट्रीट वेंडर्स का भी स्लोली लेबर हॉस्टल्स में एक बड़ा सेक्शन ऑक्यूपाई को मतलब करता है। तो आई थिंक ये मॉडल अपार्ट फ्रॉम केरला, ऑफ कोर्स केरला इज डिफरेंट ऑलटुगेदर, मैं इसलिए केरला की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जरूर मॉडल देखा जाना चाहिए और कितना इंक्लूसिव है, कैसे अलग अलग जाति के लोग भी इकट्ठे रहते हैं। ऑफ कोर्स उसमें एक कम्युनिटी बेस भी है कि कश्मीरी सब लोग इकट्ठा रहना चाहेंगे, उनका खाना इकट्ठा बनता है, तो वो मतलब वो उसकी अलग डायनेमिक्स है। लेकिन मतलब वो जरूर विजिट करने वाला और देखने वाली मतलब एक मॉडल है जहां पर इंक्लूसिव है, लोग रहते हैं और काफी अच्छी तरह से मेंटेन है। आज भी हमारे जाने के बाद भी मैं आपको बता सकता हूँ कि द लेबर हॉस्टल्स आर क्वाइट वेल मेंटेन, जहां पर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर है, ऑल द बेसिक नेसेसिटीज दैट आर रिक्वायर्ड। आई थिंक ये जो अरविंद इतना कंसर्न है कि बीच का जो होमलेस शेल्टर और घर के बीच का
एक इस पे भी मतलब थोड़ा ज्यादा एंगेजमेंट की जरूरत है, लेकिन बार बार गौतम स्ट्रेस कर रहा हूँ, दिस शुड बाय नो मीन शुड लैंड टू द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट. एक्चुअली सिटी गवर्नमेंट हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Absolutely. Absolutely. I don't think हमारा मकसद आज ये है to find that one solution versus the other, right? I mean, the scale of the challenge we are facing is so large. ये multiple approaches भी हमें लेनी पड़ेंगी. And I think, but one of the things I think is absolutely necessary to recognize कि शिमला में labor hostel बनाना also intervenes into the housing market very differently than to do it in Gurgaon in Delhi. There is so much possibility. I wish Sandeep was here today because we could talk about, what it means in small towns across UP. When it then, उस context में these are very, and वहाँ land commodification अलग है, entry अलग है, वहाँ like Mukta was saying, employers in small towns are also trying to retain workers by giving housing, right? So we should also not confuse the housing challenges of a Delhi or a Bombay or a Bangalore with the challenges of urban India, and I think this is where we have to constantly make that distinction. अगर आप राजस्थान में देखो तो जयपुर, जोधपुर, the intercity mobility is much higher. That mobility is higher because वो mobility आप economically afford कर सकते हो, उसमें वो चलता है. So I think that but if I can take, because I know we're at 5 o'clock, and I think chat पे जो suggestions के archive high is really valuable in so many ways. I just want to summarize थोड़ा सा that there are 6 mota type of things that we have come up, here today that I want to just put out here. One is this question of improving or upgrading of existing informal settlements, right? And I think this is central to the housing agenda, but it is important that we start talking about upgrading in the context of work and employment also. हम जब बस्ती के विकास के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ आवास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इसमें होम बेस्ड वर्क की काम कर रहे हैं, हम वेस्ट वर्कर्स कॉलेज में कलेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जैसे धर्मेंद्र ने बोला स्ट्रीट वेंडर्स का भी काम घर से शुरू होता है, the back end is in the house, right? So to really argue the upgrading of informal settlements is upgrading of economic zone, of economic spaces, right? So to reframe this language of the Basti as an economic zone, and I think it's important to make this argument for also the type of upgrading that happens. फिर जब हम vertical 30 square meter के flat के बारे में जाने की बात करते हैं, that automatically becomes very difficult. Economic zone cannot become flat, right? Only housing can become flat. So I think that's an important part about the upgrading story. The second story is, I think, talking about the importance of rent. अगर हम worker housing कर रहे हैं तो rent market को regulate कैसे कर सकते हैं? Existing informal rental market को समझना, उसको support देना. Right now the informal rental market is affordable, but despite any policy, उसमें कोई ना support मिलता है, ना recognition मिलता है. There is a company, for example, in Bangalore that provides full with dormitory style housing for migrant construction workers, dignified housing, full meals, but वो हमेशा कहते हैं that I pay the same tax as a 5-star hotel. Commercial taxation, कोई incentive नहीं मिलता, तो मेरा business model चलता ही नहीं, right? So why are we not incentivizing even privately run cooperative housing, right? So labor hostel absolutely सरकार को बनानी चाहिए. अगर मार्केट बनाए तो वो भी बेहतर है, बट उसके लिए आपको मार्केट को इंसेंटिवाइज करना है. You have to get appropriate tax structures, you have to get appropriate. So ITSEZ पार्क के लिए हम fiscal incentive, 5-year tax window सब दे देते हैं. What are the fiscal and spatial incentives for low income rental housing market providers? तो हमारे हर यूनिवर्सिटी के पीछे पीजी बन जाते हैं अर्बन विलेजेस में, IIT के पीछे जिया सराय, निफ्ट के पीछे कालू सराय, मगर all of them happen despite policy, not because of policy, right? So I think the rent question is very important. Can we think about, like Katyayani was saying in chat, like many briefly I saw, rental voucher systems. Can we talk about subsidies? Can we talk about income transfers that support rent? COVID के time पे बात हुई थी कि rent की समस्या के लिए आप 1000 रुपए का cash transfer दीजिए, right? Rent based transfer. Can we think about that intervention into the market, etc.? The third thing I think is the many ways की land और housing market के regulation में workers पे क्या प्रभाव पड़ सकता है. So Elizabeth talked about, many people talked about reserving land. Arvind said अगर तक land reserve नहीं होता तो नहीं, there is nothing more we can do. Tekendra said that we cannot let all land go into private commoditized hands. Mukta talked about the commoditization of land markets. So clearly this question of reservation of land at one end, but उसके बीच also the question of preserving low income housing. Elizabeth talked about it. The rules are even in Delhi 15%, 25% reservation, but like she was saying, that reservation often is not implemented. वो vacancy में चल जाता है, right? So how do you bring vacant land back?
And this question then of thinking also of shelters as spaces for residents for workers. So land and housing market के जो interventions that we have discussed. The fourth thing I think that's really important is movement के also काफी reflection हमको सुनने को मिला है. Dharmendra said this, Elizabeth said this. Whereas worker movements we have not quite. I like Dharmendra's language. हमने front end पे focus किया है, back end पे इतना focus नहीं किया है. I think home-based workers have always been separate from this because उनके लिए आवास और काम की issues को आप separate कर ही नहीं सकते. So that is the place where they have always been together. But I think this question of worker movement realizing कि housing demands को भी front-end demands की तरह ही treat करना है. And we have to start thinking of the interconnection, especially for informal workers. Not separating issues of labor rights and housing rights, but उसको किस भाषा में हम जोड़ें? In what claims? The question of with what claims do we make this connection and to whom? I think is really important. And I think the last point I want to bring up, and one of the places where this should show up, हमारे existing policies, Building of Construction Workers Act के fund को use करें, NASP के implementation में, Town Meeting Committee के meetings में, Domestic Workers Draft Bill के drafting में, can we start putting housing as a front end concern? Can we start seeing in the next 5 years examples of Building and Construction Workers Fund across states used for worker rental housing for migrant domestic sector? I think ये हमारा test होगा. यही नहीं कि हम अपने मुद्दे में डालें, but जो existing schemes हैं, क्या उसको हम डाल सकते हैं? And I think that the last point I want to pick up is this idea कि अगर worker housing को seriously लिया जाएगा, तो जिस प्रकार के housing बनती है वो सिर्फ family based household ownership based housing नहीं. So non-household, temporary housing, dormitories, labor hostels, migrant hostels, informal rentals, ये multiple forms of housing को हम protect कैसे कर सकते हैं, बड़ा कैसे करते हैं, produce कैसे कर सकते हैं, manage कैसे कर सकते हैं. But I think these are really important questions, and to see them as intervention, both as state practice and as market practice. So I think सवाल ये है कि state demand हमारी ऐसी है कि state को भी labor hostel बनाने चाहिए, private market को भी informal rental loan करना चाहिए. But both of them should put together, I think, in so many ways. अब एक सवाल, I think one of the things that has been very difficult is जो नए labor codes आए हैं, तो security codes आए हैं, उनमें housing का जिक्र नहीं. Just like the earlier question, like the national manufacturing policy had no mention of housing for workers. तो जो industrial model township है, it is इत्तेफाक की बात नहीं है कि IMT में worker housing नहीं बनी जाता. It's because the manufacturing zone policy does not require you to have housing for workers. Even your own formal workers inside the manufacturing zone, let alone informal workers. So I think बड़े तादाद पे we are fighting a imagination में disconnect between the idea that employers are responsible for housing. That work must be a basis of claim for housing. दोनों तरफ claims को भी बढ़ावा देना और वो जिम्मेदारी को वापस जोड़ना. That employers must be part of the delivery solution in whatever way we're talking about. Because I think and informal sector में वो employer कौन है और contractor है या private कौन है, ये हमें चुनना पड़ेगा. We'll have to innovate. So the state will have to step in some way. But I think the idea is as long as we have accept the separation of employment and housing, and therefore the separation between employer and landlord that Mukta started with, we are always going to have a hard time putting that together. I think the idea that much of the idea of today's discussion was to say कि हम work और housing को वापस कैसे जोड़ सकते हैं. And these are many ideas that we have got in front of us. And I absolutely think together की बात से maybe we should end कि ये जो claim है कि ये जिम्मेदारी सरकार और employers को दोनों को लेनी पड़ेगी. It's not just nostalgia, it is also our present claim. And it will be our future claim. So ये no one is ready to let go of this claim. मगर we must articulate the claim in today's circumstances, in today's political economy, in today's market, and find multiple ways that this claim can be delivered. And I think we've got lots of great ideas. So I wanted to thank everyone for participating, और खासकर अनीता जी और धर्मेंद्र जिसको हमने एकदम instant panelist बना दिया, जैसे मैगी मुझे बनता है 2 मिनट में एक तरीके से. और and for Katyayani's multiple inputs on chat, thank you so much. We've not been able to read that far away from the screen, but I really want to read the hard copy. And to Nidhi and to Anand, to Arvind and to Mukta and Shalaka and to Sikinder and to Elizabeth particularly, I think for just really grounded experiences. And I think ये जो ये in a sense North Zone वाला seminar discussion है, but मुझे लगता है जो themes आ रही हैं वो यहाँ से आ रही हैं, but they are not limited to lessons only from here.
And I think it's important, Mukta's point, कि localization के बिना सरकार अभी भी decentralized और localized ना हो. It is very important कि हमारे जो analysis of practices है वो बिल्कुल localized तरीके से ही चले. We cannot be in the practice of placeless best practice models floating around. हर जगह labor hospital money etc. Right? And I think this is exactly the point. जैसे Tejinder अरविंद को कह रहे थे कि तुम labor hospital को अभी मत छोड़ो ऐसे. I know Delhi में hard है, मगर शिमला में बन रहे हैं, right? So I think this is the kind we have to also take opportunities in different places and at different scales. But if we can begin to try and put back worker and housing, then the discussion we started today, I think, is really done. So I'll hand back. Shalaka, if you want to have any closing comments, so I think बहुत बहुत शुक्रिया सबको for joining. Thanks all to all the panelists again, and we will end today's discussion here. So thank you all very much. Yeah, Gautam. Yeah, just for the ending session, we like I was not able to say that much, but the only thing we can say is that housing for the workers, it seems like on a certain payment is looked after well by the landlords and their consorted employers in an indirect way. So the thing is that if privately, if they are able to look after for this kind of a thing in a particular way, why don't we create a kind of a momentum in which we have to knock at the government also that if certain amount has to be gained, not for temporary or certain for a project side, then why something permanent that we need to harper for the workers? Absolutely. I think the multiplicity of solutions, Elizabeth is absolutely right. I think we are both holding the state accountable, but also moving for localized private solutions. I think, like we were saying earlier, we need 10 different strategies in 10 different places working at the same time. I think the idea is not to pick between them. And you know, in Gurgaon, it is obvious that the market is going to be part of the solution because that is the urban nature of Gurgaon and the city. So I think that is where the localization really comes. So we're not going to have hard and fast only this way or only that way. I think the idea is to really learn from the multiplicity. And so I wish we could have heard a lot more from you, but even the intervention you did was excellent. Thank you so much for it. Okay, folks, talk soon. Take care, everybody.